ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नमन एंड आई चेयरफुली वेलकम यू ऑल टू टुडेस लेक्चर नंबर 59 ऑफ PSIR lecture series. In today's lecture, we are going to discuss about Manusmriti and the theory of the origin of state in Manusmriti. We will also be talking about several other theories like the divine origin of king and several duties which were recommended to the king by the Manusmriti in order to have a social order in the society. तो आज यही सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में एक PYQ भी देखेंगे जो हम आज के लेक्चर से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि आज हम धर्मशास्त्र का जो टॉपिक है वो खत्म कर देंगे। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स and just hear it patiently. Okay, at the end I can assure you that you will get something very very positive and you will be able to solve the question which are our major agenda for the lecture. All right, so with this let's get started. So the first we are going to start with the concept of divine origin of the state. What is the concept of divine origin of the state? So first, Manusmriti says that the concept of divine origin of state is based on quasi-contractual theory. So what is quasi-contractual theory of the state? So basically Manusmriti says that state is a contract between man and God. जो state बना दोस्तों वो एक contract से बना जो कि between man and God है, right? So chapter 7 of the Manusmriti mentions the theory of quasi-contractual theory of state. All right. So initially there was no state before the man and God they have come into the contract. There was no state, right? It was a state of arajakta. What is arajakta दोस्तों? It is basically anarchy. State of anarchy. There was a state of anarchy which was chaotic, which was fearful, and etc. All right. In this situation, there was basically a prevalent of Matsya Nyaya. What is Matsya Nyaya? Basically, big fish eating small fish. Right? Might is right, and etc. This is basically the concept of Matsya Nyaya. हिंदी में एक कहावत है, आपने सुनी ही होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो 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 सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्स कंट्रोल करने लग जाता है, राइट? सो दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मत्स्य न्याय, which basically means big fish eating the small fish, right? So hence people requested Brahma, right? In yesterday's lecture we have seen how Brahma, whose Manasputra Manu was the first lawgiver, right? So people requested Brahma, who created Manu, right? And Manu ultimately became the first lawgiver, right? He was the author of this particular Dharma Shastra, that is Manusmriti, in which the entire dictate of dharma has been prescribed to people. All right, so now it is the duty of the people to obey the law. Now the god Brahma, who has created Manu, has prescribed the dharma for the people, for the society, right? अब ये लोगों का धर्म बनता है, ये लोगों की ड्यूटी बनती है दैट दे फॉलो दिस पर्टिकुलर लॉ बुक धर्मशास्त्र, दैट इज द मनुस्मृति, राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज दैट आवर द मनुस्मृति prescribes basically quasi-contractual theory of state, friends. All right, quasi-contractual theory, which is basically a contract between the man and God, right? It is some kind of it is having a similarities with the social contractualist theory, like social contractual theorists like Hobbes, Locke, and Rousseau, right? They also have a kind of contract between the people to form a absolute authority, right? Likewise here the Dharma Shastra, Indian Dharma Shastra, is also kind of suggesting a quasi contractual theory between the man and God, right? And God has endorsed the absolute authority in the form of the Dharma Shastra, which has been prescribed in the Manusmriti. All right, so now let's see the divine origin of the king, right? हमने ये देख लिया, हमारी लेट्स से हमारी लॉ बुक तो बन गई, हमारी धर्मशास्त्र तो बन गई, राइट? बट धर्मशास्त्र ने बताया कि देयर शुड बी अ किंग who will be ruling, who will be controlling the society and ensuring that there is a social order which is prevailing in the society. एक किंग होना चाहिए जो एंश्योर करेगा कि सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर है, राइट? तो इसके लिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों? टू हैव वन किंग, राइट? अब किंग कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं, राइट? सो बेसिकली मनुस्मृति इटसेल्फ प्रिस्क्राइब्स द डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंग, राइट? डिवाइन ऑरिजिन ऑफ द किंग. What does this mean? That the king will have divine personality, right? King will have divine personality, that is 8 gods have given part of their personality to the king, right? Thus king combines the virtues of Indra, Varun, Agni, Vayu, Surya,
Chandra, Yama, and Kuber, right? So these are the 8 major gods according to the Hinduism, right? Indra, the Varuna, right? Agni, Vayu, Surya, Chandra, Yama, and Kuber. So the individual who will have the virtue of all these 8 gods shall be the king, right? There is a difference in the idea of kingship in the east and the west, right? For our understanding, we have to know that there is a difference in the idea of kingship in the east and the west. What is the difference, sir? In west, king used to have divine personality as well as the divine rights, right? What was the concept in the west? अगर हम ध्यान से समझे दोस्तों, so जो king होते थे वो they were the divine heirs, they were the divine heirs, direct descendants of God, right? जो वेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट था, जो किंग है दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द गॉड एंड हेंस दे विल हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी, they will have absolute authority to rule over the people, right? To rule over the people. ये कॉन्सेप्ट था वेस्ट में. अगर मैं आपको एक बार और बताऊं तो वेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट था? वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट था कि जो किंग होते थे, राइट, जो किंग होते थे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ गॉड होते थे, राइट? उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी टू रूल ओवर द पीपल, टू रूल ओवर द सॉवरेन, राइट? बट इंडिया में क्या डिफरेंट है? इंडिया में ये डिफरेंस है दोस्तों, किंग वो डिसेंडेड, उनके पास वर्च्यू तो गॉड का है बट उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है. उन्हें भी अपने राज्य धर्म के बेसिस पे रूल करना पड़ेगा. राज्य धर्म के बेसिस पे रूल करना पड़ेगा. व्हाट इज द राज्य धर्म? राज्य धर्म इज अ लिस्ट ऑफ धर्म विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास, इन द धर्म शास्त्र एंड वेरियस लेजेंड्स, राइट? तो ये डिफरेंस होती थी. वेस्ट में ये होता था, किंग्स के पास एब्सोल्यूट राइट होती थी, वो अपनी मन मर्जी से लॉ बना सकते थे. अगर वो चाहे कि आज कोई भी टैक्स नहीं देगा तो नहीं देगा, अगर वो चाहे आज लोग 100-200% टैक्स देंगे तो वो भी कर सकता था. बट इंडिया में वैसा नहीं है. इंडिया में किंग को अपना राज्य धर्म फॉलो करना पड़ेगा. ही कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन विम्स, राइट? ही कैन नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन विल. ये है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. ऑलराइट, किंग्स डिड नॉट हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, किंग्स वेयर अंडर द लॉ, राइट? हम इंडिया की बात कर रहे हैं. हमारी इंडियन ट्रेडिशन में क्या है? किंग्स डिड नॉट हैड एब्सोल्यूट राइट. Even kings have to follow the Rajya Dharma, right? That is dharma as found in the Dharma Shastra like Manu Smriti, all right? Or told or advised by the Brahmins. If kings does not follow dharma according to Manu, such king will go to the hell, right? The best example that we have in our most ancient legend, that is Mahabharata, right? Mahabharata. In Mahabharata, we have 2 characters. The first one was Yudhishthira and the second one was what? Duryodhana, right? We know how the Yudhishthira was whom? He was the Dharmaraj. Yudhishthira was the Dharmaraj Yudhishthir, right? He always used to abide by the Dharmaraj of his state. But Duryodhana used to act on his whims, right? And ultimately what happened in Mahabharata? In the war, Duryodhana went to the hell, or we don't know whether he went to hell or the Swarg, but he got destroyed, right? So this is what Manu is also saying. The king who will not follow the dharma will go to the hell, right? King is supposed to be from Kshatriya Varna, right? So this is a uniform across all the clans, all the communities, that king will be from Kshatriya clan, right? Kingship was a hereditary institution. What does this mean? If Yudhishthira is a king, his son will pass on the heredity, right? His son will inherit the kingdom from his father, right? So it will pass from generation to generation, right? Generation to generation. What is the essence of this thing, friend? Right? We basically understand कि चलो हमारा जो राज है वो generation to generation pass हो जाता है, right? But क्यों होता है? So basically it was believed in our ancient tradition. हमारे ancient tradition में ये माना जाता था, let's say युधिष्ठिरा का जो virtue है, जो godly virtue है, ये उनके बेटे में भी आएगा. जो सन ऑफ युधिष्ठिरा होगा ये उनके बेटे में भी आएगा, एंड हेंस ही विल एंश्योर टू कैरी ऑन द लीनिएज ऑन द सेम लाइन, राइट? दैट इज व्हाई इट वाज प्रिस्क्राइब्ड दैट कि जो किंगशिप होता है वो हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए रेदर देन द इलेक्टिव और सेलेक्टिव वन, राइट? सो दिस वाज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग, राइट? हमने क्या जाना इसमें? डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग. डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग में हमने जाना दोस्तों बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेडिशन में
we have devoted the concept of divine origin of the king, right? That king is the direct descendant of the god, right? But ईस्ट एंड वेस्ट में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, वो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी का। वेस्ट में किंग्स के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था, बट ईस्ट में इंडियन ट्रेडिशन में किंग्स के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होता है। इवन दे हैव टू गवर्न द स्टेट बाय द धर्मराज्य, बाय द राजधर्म दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र और एडवाइज्ड बाय द कोर्ट ब्राह्मण्स, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग। इसका मेन पर्पस क्या था दोस्तों? हमने ये तो जान लिया कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग था, जहां पे किंग डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ गॉड थे एंड एक्सेट्रा, ये तो आपको सब बताते हैं, राइट? बट इसका एसेंस क्या है? जानने वाली बात है दोस्तों कि इसका एसेंस क्या है, क्यों ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह किंग को एक डिवाइन ओरिजिन बताया जाता था। इसका मेन एजेंडा था दोस्तों लेजिटिमाइजेशन। सर व्हाट डज दिस मीन? लेजिटिमाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों? लेजिटिमाइजेशन फ्रॉम द पीपल until and unless people they do not accept that the king is direct descendant of God, they will not accept the authority of the king, right? उनके दिल में, उनके दिमाग में एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आएगा किंग को लेके, एंड अगर वो किंग को लेके एक्सेप्टेंस नहीं आया तो किंग अपना ड्यूटी, अपना रोल फॉलो नहीं कर पाएगा, किंग अपनी स्टेट को अच्छे से गवर्न नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, राइट? व्हाई दे विल बिलीव ऑन एनी रैंडम गाय, राइट? इसीलिए धर्मशास्त्र ये बोलते थे कि किंग इज बेस्ड ऑन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द गॉड, राइट? ही इज समवन डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द गॉड, ही हैज अ वर्च्यूज ऑफ द गॉड, राइट? इसीलिए जो लोग होते थे वो किंग को एज एन एपिटोम ऑफ गॉड भी मानते थे, राइट? वो किंग को राजा मानते थे, वो किंग को महाराजाधिराज मानते थे, वो गॉड के इक्विवेलेंट मानते थे, राइट? एंड everyone will follow the law that has been prescribed by the god, इसीलिए वो किंग को भी फॉलो करते थे, एंड वो अल्टीमेटली किंग को एक लेजिटिमाइजेशन देता था, एक अथॉरिटी देता था टू गवर्न एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी, राइट? ये है बेसिक व्हाई डू वी हैव अ थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग in east and west as well, right? The main agenda was to get legitimization from the people, right? So that people will accept the authority of the king. All right, so now it is a time for active recall. Friends, try answering this particular question, and you know the drill. Mention your answer in the comment section. All right, so the question here is that Manusmriti explanation of origin of state can be called as, all right, social contractual theory of state, quasi contractual theory of state, divine theory of kingship, organic theory of state. All right, so these are the four options. You have to select one and you have to put in the comment section. All right, so do not neglect this, try answering this, because if you will do this small work, right, if you will do the little exercise, it will help you retain in the exam, right? And अगर आप अभी करेंगे तो आपको एग्जाम में अगर आप भूल भी जाए तो आपको क्लिक करेगा कि नहीं यार मैंने ये आंसर कमेंट में किया था, ये होना चाहिए आंसर, एंड यू विल बी एबल टू recall certain terminologies, words, concept better in the exam. All right, this is the main purpose of active recall. All right, so let's move further. Now we have seen the origin of state, we have seen the concept of divine origin of the king, right? Now Manusmriti has been prescribing certain duties of the king. हमने एक स्टेट बना लिया, right, which is based on the quasi contractual theory of state, right? उसके बेसिस पे हमने एक किंग बना दिया who will be responsible to govern and have social order in the state. Now duties of the king, right? हमने किंग तो बना दिया, बट किंग की ड्यूटीज क्या होंगे, राइट दोस्तों? जैसे कि हमारी मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन में द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज बीन क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड, राइट? सो एज टू एलिमिनेट एनी बायसनेस और दी एक्टिंग ऑन द विम्स, राइट? अगर किंग ऐसे करने लग जाएं तो क्या हो सकता है? फिर एक ऑटोक्रेसी, एक टोटलिटेरियन, एक अथॉरिटेटिव किंगडम एस्टैब्लिश हो सकती है। इसीलिए मनुस्मृति जो हमारा धर्मशास्त्र है उसमें क्लियरली ये एनलिस्ट कर दिया गया है कि किंग्स की ड्यूटीज क्या होंगी, राइट? किंग्स की ड्यूटीज क्या होगी इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन द स्टेट, राइट? सो मनुस्मृति आउटलाइंस द ड्यूटीज ऑफ द किंग इन एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस एंड इन्फोर्सिंग द लॉ, राइट? It prescribes punishment for the various offenses and crimes, right? So under the chapter of Dandaniti, right? Dandaniti, मनुस्मृति में एक चैप्टर है दोस्तों दंड नीति। इसमें जो मनुस्मृति है वो वेरियस पनिशमेंट
प्रिस्क्राइब किया है फॉर वेरियस ऑफेंसेस एंड क्राइम्स, राइट, रेंजिंग फ्रॉम फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट टू corporal punishment and capital punishment, even to like death, mutilation, exile and etc, right? So punishment becomes one of the very central idea in Dandaniti, which is a part of Manusmriti, right? The king is expected to act as the ultimate authority in educating disputes and resolving conflicts within the kingdom, right? कोई भी अगर conflict बिटवीन कम्युनिटीज हुआ, बिटवीन कास्ट हुआ, बिटवीन क्रीड हुआ, तो किंग विल बी दी एब्सोल्यूट अथॉरिटी दोस्तों इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, राइट, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी conflict, king will be the absolute authority, right? So let's see various dimensions or various spectrum of duties that has been prescribed, right? So first duty which has been prescribed is protection of the realm. What is protection of the realm? The primary duty of the king is to protect the kingdom, राज्य, right? अगर उसका राज्य ही सलामत नहीं रहेगा, then how will he be able to govern effectively, right? How will he be able to maintain social order? So first and foremost duty is of the protection of the kingdom, protection of the realm, right, from external threats such as invasion or aggression by foreign powers, right? So this is a school of रियलिज्म दोस्तों, राइट? एंड वेस्ट ने आसानी से तो बोल दिया दैट इंडिया लैक्स पॉलिटिकल विजडम, बट मेरे को लगता है कि दे हैव नॉट स्टडीड मनुस्मृति वेल इफेक्टिवली, राइट? उन्हें या तो समझ में नहीं आया होगा या उन्होंने सिर्फ कवर पेज देखा होगा, उसमें एक योगिक स्ट्रक्चर में एक बाबा जी मेडिटेशन कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये लेबल कर दिया कि मनुस्मृति और द इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन इज नॉट सो एडवांस्ड, राइट? दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअल रल्म रेदर देन पॉलिटिकल रल्म। बट उन्होंने अंदर अगर पेज खोल के देखा होता तो उन्हें पता चलता कि जो रियलिज्म की बात वो सालों बात कर रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र वो 200 BC टू 200 AD के बीच में ही कर रखे हैं, राइट? सो फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट किंगडम फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स सच एज इन्वेजन और एग्रेशन बाय द फॉरेन पावर्स। मुझे एक इंग्लिश का कहावत याद आया दोस्तों, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए भी बहुत काम का है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? हम आसानी से किसी भी चीज को देख के जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं विदाउट उसके एसेंस को जाने बिना, राइट? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे इंसान के, किसी भी सिविल सर्वेंट, किसी भी ब्यूरोक्रेट या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी मुद्दे के तहे तक जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर हम सिर्फ अपनी जजमेंट पास कर देंगे, वो हमारी सिर्फ बायसनेस होगी, वो हमारा एक खोखलापन होगा, वो हमारी एक हॉलोनेस होगी, राइट? वो हमारी इग्नोरेंस को बताएगी दोस्तों। इसीलिए हैव पेशेंस, लुक एट दिस सिचुएशन वेरी क्रिटिकली विदाउट एनी जजमेंट। आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। अगर आपको कोई एक इंसान ऐसा कुछ बोल रहा है तो नो द अदर साइड एज वेल, राइट? देन यू हैव योर राइट टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, जो आपको सही लगता है, जो आपकी सब्जेक्टिव रीजनिंग है उसके बेसिस पे, राइट? इसीलिए द किंग इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, एंश्योर सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द किंगडम बॉर्डर्स, राइट? सो ये फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग है टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन एंड हैव स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स टू सिक्योर द किंगडम बॉर्डर्स, राइट? ये फर्स्ट ब्रॉडर ड्यूटी है दोस्तों, राइट? द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक बार हमारी बॉर्डर सिक्योर हो गई तो हमें इंटरनल सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करना है, राइट? सोशल ऑर्डर भी हमें मेंटेन रखना है, राइट? सोशल ऑर्डर कब मेंटेन होगा? जब वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म होगी, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस होगी, राइट? तो इसीलिए मनुस्मृति किंग को बोल रहा है कि यू शुड हैव एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, राइट? द किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ विद इन द kingdom, right? So king is responsible for administration of justice, right? He is expected to establish court of law. देखो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक की, अब हम बात कर रहे हैं रियल पॉलिटिक की, राइट? हाउ myriad, right? How myriad the horizon of मनुस्मृति is, राइट? जब दुनिया में कोई ये सब की बात नहीं कर रहा है, तब मनुस्मृति किंग को प्रिस्क्राइब कर रहा है दैट यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड हेंस यू शुड हैव कोर्ट्स ऑफ लॉ, अपॉइंट जजेस एंड ऑफिशियल्स एंड एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट फेयरली एंड इम्पार्शियली।
राइट देखिए इसकी एसेंस को हम अभी समझिए, राइट इसकी एसेंस की गहराई तक जाके समझिए कितना इंपॉर्टेंट मनुस्मृति हमारे लिए हो सकता है, राइट स्पेशली हिंदुइज्म। एंड दिस शुड नॉट बी लुक्ड एट वेरी वेरी पेरोकियल मैनर इन वेरी वेरी नैरो माइंडेडनेस, बट इसकी आप पर्सपेक्टिव को देखिए, इसकी आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस को देखिए, इसकी आप ब्रॉडर आइडिया को देखिए, राइट कैसे वो किंग को प्रिस्क्राइब कर रहा है इन ऑर्डर टू हैव एन सोशल ऑर्डर मेंटेन इन द सोसाइटी, राइट। द थर्ड ड्यूटी विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ धर्म, राइट हमने बॉर्डर बचा लिए, हमने अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर लिया, अब हमें एंश्योर करना है दैट देयर इज अ धर्मा अमॉन्ग द पीपल, राइट। अब पीपल को हमें वर्चुअस बनाना है, हमें लोगों को वर्चुअस बनाना है, हमें लोगों में मोरालिटी प्रमोट करनी है, राइट वो कैसे करेंगे, बाय प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा, राइट। किंग इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग धर्मा एंड प्रमोटिंग राइटियस कंडक्ट विद इन द किंगडम, राइट। ही इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा आर रेस्पेक्टेड एंड ऑब्जर्व बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द किंग हिमसेल्फ, राइट। सो व्हाट इज द धर्मा दोस्तों, सो मनुस्मृति के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कैसे मनुस्मृति वर्च्यू द वर्ना सिस्टम को एक वर्च्यू बताता है, राइट एक धर्म बताता है, पुरुषार्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ देता है, जहां पे ये लोगों के लिए अर्थ काम मोक्ष सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन जस्ट अलाइनिंग ऑन अ सिंगल एसेंस, राइट। तो पुरुषार्थ वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास होते हैं, दे शुड स्टिक टू देयर जॉब्स एंड विदाउट इग्नोरिंग देयर टास्क एंड ड्यूटीज एंड एक्सेट्रा, राइट ये सब क्या है, ये धर्म है। एंड किंग शुड एंश्योर दैट देयर इज अ धर्मा, देयर इज अ सेंस ऑफ धर्मा विच हैज बीन मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, राइट लोग अपने वर्ण सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लोग अपने पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा है जो किंग को एंश्योर करना है। द नेक्स्ट वन इज वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट हमने बॉर्डर बचा लिए, हमने जस्टिस एडमिनिस्टर कर ली, हमने लोगों के बीच में धर्मा प्रमोट कर दिया, उनकी वर्च्यू मोरालिटी प्रमोट कर दी, अब हमें वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, अब हमें अपने सब्जेक्ट्स की वेलफेयर की तरफ भी सोचना है, राइट। द किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ हिज subjects, right he is expected to provide basic needs of the people such as food, shelter and healthcare and to take measures to alleviate poverty, hunger, suffering within the kingdom, right। तो अगर आप इसकी एसेंस को समझे दोस्तों, तो मेजर कॉज ऑफ किसी भी सोसाइटी में मेजर कॉज ऑफ टर्मोइल क्या होता है, मेजर कॉइल ऑफ डिस्टर्बेंस, मेजर कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होता है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज होती हैं, राइट। अगर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने का अच्छे से खाना नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो दे विल ऑल रिजॉर्ट टू illegitimate activities, right they will all resort to illegitimate activities like theft, robbery, डकैती एंड एक्सेट्रा, राइट। इसीलिए मनुस्मृति किंग को प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप सब्जेक्ट्स की वेलफेयर के लिए भी सोचे, सो दैट देयर इज अ नो सेंस ऑफ पॉवर्टी, हंगर, सफरिंग इन द किंगडम एंड पीपल। अगर लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान है तभी लोग अपनी वर्च्यू मोरालिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, राइट। इसीलिए किंग को साफ शब्दों में मनुस्मृति कह रहा है कि ऑल्सो लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। इट इज नॉट मेयरली इंपॉर्टेंट that the subject will have social order if they are not having the basic needs fulfilled in their life, right। That is why it becomes very very important for the king to have welfare of the subjects as well, right। The last one is maintenance of the social order, right। The very very basic and fundamental duty is the maintenance of the social order in the society. The king is responsible for maintaining social harmony and order in the kingdom, right। He is expected to prevent and resolve conflict between different social groups such as caste and communities and to ensure that each individual is treated with dignity and respect, right। Man individual is an end in itself and hence he should not be treated as a means to an end, right। That is why it becomes very very important to have that डिग्निटी ऑफ द मैन, राइट। सो अभी दोस्तों अगर आप इसे बहुत ध्यान में देखें एंड अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि सर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ऑर्डर का क्या रिलेशन है, तो दोस्तों मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर
लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, तो वो कुछ दिनों तक सह सकते हैं. बट द मूवमेंट someone attacks on their dignity, someone attacks on their dignity, someone ill treats them, they will rise to revolt, they will rise to revolt, they will rise to revolution. राइट, इसीलिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर करना एक बहुत जरूरी काम हो जाता है किंग के लिए, टू हैव सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी, टू हैव पीस इन द सोसाइटी. राइट, तो ये 5 ब्रॉड ड्यूटीज थे दोस्तों जो मनुस्मृति ने प्रिस्क्राइब किया है किंग को. राइट, पहला क्या था? सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ द रल्म, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम, ये प्राइमरी ड्यूटी था. सेकेंड था प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स. राइट, थर्ड क्या था? मैं आप सबको एक बार दिखा देता हूं. फर्स्ट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ द रल्म. राइट, सेकंड क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. थर्ड क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ द धर्मा. फोर्थ क्या था? वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट. एंड फिफ्थ क्या था? मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर. ये 5 ब्रॉड ड्यूटीज थे जो मनुस्मृति ने किंग को प्रिस्क्राइब किए हैं. राइट, अब ये एक लिस्ट ऑफ वेरियस ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों हम कह सकते हैं, जो मनुस्मृति किंग के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है कि किंग होना कैसे चाहिए, स्पेसिफिकली किंग होना कैसे चाहिए या किंग को क्या करना चाहिए. राइट, खुद के लिए, एंड इन ऑर्डर टू हैव अ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द किंगडम. राइट, सो किंग शुड फॉलो वर्ण धर्म. राइट, दैट क्षत्रिय धर्म, king should follow his kshatriya dharma and he should fight whenever there is a disharmony in the society, disharmony in the society. अगर आपको महाभारत का थोड़ा जानकारी होगा दोस्तों, so we know the confusion of Arjuna, right, dilemma of Arjuna. कैसे उसका क्षत्रिय धर्म तो होता है दोस्तों लड़ना, लेकिन जब वो अपने अपोजिट साइड में अपने ही फैमिली वालों को देखता है, अपने ही लोगों को देखता है, जैसे कि भीष्म पितामह जैसे लोग अपने ही भाइयों को देखता है, तो ही ऑल्सो फॉल्स इन डिलेमा कि मैं कैसे उनके अगेंस्ट में हथियार उठा सकता हूं. राइट, टू हैव सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी. बट यहां पे मनुस्मृति साफ साफ शब्दों में बोल रहा है कि द किंग शुड फॉलो हिज क्षत्रिय धर्म, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिसहार्मनी इन द सोसाइटी, व्हेनेवर देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सोशल order in the society, king should always resort to war. King should always pick up the danda, the dharma danda. King should always pick up the dharma danda or dharma rod in order to have the social order restored in the society. Right, king should have knowledge of Vedas. Right, king should have knowledge of Vedas. King should respect Brahmins. King should get up early in the morning. This is something very very unique दोस्तों. King should get up early in the morning in order to do all the sanskara. Remember we have done 16 samskara karma kanda in yesterday lecture, right? So king should wake up early in the morning in order to do samskara. Right, king should not sleep during the daytime. King should, this is very very unique, but this is the precision, this is the accuracy of Manusmriti that has been specifically ordered to the king. Right, that king should get up early, king should not sleep during the daytime, king should not indulge too much in hunting, gambling, drinking, dancing, king should not indulge too much with women, king should worship Brahmins daily, king should construct public utilities, king should take care of orphans, destitutes, and etc. Right, so these are there are 3 more. King should help his people to achieve Yogashema. What is Yogashema दोस्तों? Yogashema क्या होता है? It helps people to achieve their 4 purusartha. Right, purusartha. So this is Yogashema, and king should help people to achieve their purusartha. Right, so raksha and palan, protection and maintenance, are the responsibility of the king. Right, king should administer punishment according to shastra. Right, shastra, whatever punishment that has been prescribed in the shastra, king should always prescribe punishment on the basis of that. In Manusmriti there is a no concept of equality before law. This is very very important दोस्तों. There is a no concept of equality before law because the lower is the caste, lower is the varna, lower is the varna, the higher is the punishment, higher is the punishment. Now few curious mind might be asking this question, sir, what is the logic here? What is the logic here? So friend, there is a logic here, right? Initially what it was
used to be believed that the higher the caste like Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras, right? So the Brahmins, they are higher educated, right? They are more intellectuals than the Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Similarly, Kshatriyas were more trained than Vaishyas and Sudras, right? So it was believed that Brahmins will not commit any sins, right? Brahmins will not commit any sins. But since the Sudras, they were the least educated, they were the least trained, they are more prone to the crimes, right? They are more prone to crimes. So in order to create this sense of deterrence, उन्हें ये बोला जाता था आप अगर जितने लोअर कास्ट के होंगे उतना पनिशमेंट आपके लिए ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थ्रेट ऑफ क्राइम भी लोअर कास्ट से ज्यादा थी दोस्तों, क्योंकि ये माना जाता था they are less educated, they are less trained, right? And hence they are more prone to crimes and etc. इसीलिए उनके लिए क्राइम का जो मात्रा था वो बहुत बढ़ा दिया जाता था, right? This is why the lower the varna, the higher is the punishment for the same offense, right? So this is the idea or the duties which is being prescribed to the king, right? So again, this is a time for active recall and also a break for a minute. All right, so try attempting this particular question. Which of the following statement is not correct? All right, so in West, king used to have both divine personality as well as divine rights. All right, in India, kings had divine personalities. In India, kings had to follow Raja Dharma. In India, kings had divine rights and hence absolute authority, right? So option A, B, C, D. All right, choose any one of them and comment and put your answer in the comment section. All right, I will have a look and also revert back with positive feedback. All right, so with this, I'm hoping that you guys have answered the question faster than me. This emoji looks cute though. This emoji looks very, very cute, but it is again a bit surprised as well. I don't know whether he's thinking about the question or he is surprised about something else, but he looks surprised or she looks surprised as well. So this is cute, but never mind. I'm hoping that you guys have put your answers in the comment section. All right, so interestingly friend, Manusmriti has also talked about taxation, right? So do we remember the Arthashastra of Chanakya, right? So Arthashastra is also Dharma Shastra, which has been very, very comprehensively designed, right? But even Manusmriti is kind of giving a direct challenge to Arthashastra, right? So Manusmriti is also talking about taxation, and what Manusmriti has to say about taxation. So Manusmriti also deals with the principle of taxation, right? So principle of taxation is directly proportional to fertility. This is the principle of taxation, right? That the taxation amount of taxation should be directly related to the fertility of the land, right? This should be directly proportional to the fertility of the land, right? That is 1/6 of the produce is king's share from the fertile land. If the land is very fertile, then the king have 1/6 share of the produce, right? 1/6 share of the produce. So let's say if a field is very, very fertile and it is producing 30 kgs of wheat, I am taking very small field of land, friend. Okay, so 30 kg for me is enough. So 30 kg, so 1/6 of the produce. All right, so 5 kg will be the king's share. 5 kg will go to the king's court. All right, so this is the case if the land is very fertile. All right, 1/8 from the less fertile. All right, so if the land is a little bit less fertile, then the king's share will be 1/8 and 1/12 in the case of least fertile, right? So what are the different measurement? 1/6, 1/8 and 1/12, right? So these are the three categories on the basis of fertility of the land. So sir, how king used to know the fertility of the land? So king had an special investigating officer, friends. King
king appointed a special investigating officer who used to go on every cultivating season, harvesting season, to check the fertility and produce of the land, right? And on the basis of that, he used to devise the rate of taxation, whether it will be 1/6, 1/8, or 1/12. So this was the mechanism. All right. King also has a share in other produce. So not only in agricultural production, king also had a bit of share in other produces, such as king had 1/6 share in milk, right? Honey, meat, butter, and other commodities which were traded during their times. All right. So this was the mechanism of taxation which has been prescribed by the Manusmriti to the king. All right. So now we have seen the concept of origin of the state based on the quasi-contractual theory. We have seen the divine origin of the king. We have seen the various duties that has been prescribed to the king, right? We have seen the principle of taxation that has been mentioned in the Manusmriti. Now finally, let's see some of the criticism by the scholars. All right. So first and foremost, criticism which was from the scholars is based on the caste-based discrimination which they find in the Manusmriti, right? So when I speak about caste-based discrimination, the first idea जो हमारे दिमाग में आता है दोस्तों वो है वर्ण सिस्टम, right? वर्ण सिस्टम जो मनुस्मृति में दिया गया है, right? So one of the most prominent criticism of Manusmriti is its endorsement of caste system and hierarchical division of society based on birth, right? So कैसे जन्म के बाद ही लोगों को 4 वर्णास में बांट दिया जाता है, right? So people they never get to decide their fate. जो उन्हें वर्ना असाइन कर दिया गया, they have to perform their role on the basis of their varna. If they are not sticking to varna, king will punish them, right? So if anyone is born in Sudras, their life is completely into vain, right? So this is the first criticism which scholars they criticize Manusmriti on the basis of caste-based discrimination. The one very famous, very talked about criticism is on the basis of subjugation of women. दोस्तों, we never know the true context of this particular idea, but it is believed, right? Like people, like scholars like B.R. Ambedkar, they have said to the people, like, put a dynamite into the Vedas and Manusmriti, right? So the first and foremost reason for B.R. Ambedkar ordering people to put dynamite was basically these two reasons, that is caste-based discrimination and subjugation of women, right? So Manusmriti has been criticized for its patriarchal attitude, right? So even to till date, we have a patriarchal society transitioning to a more egalitarian society. So the source of this patriarchal society goes to Manusmriti, dosto. From here it is coming, right? And treatment of women as subordinate to men, right? Manusmriti has always treated women as a subordinate to men, right? It contains numerous verses that prescribe strict gender roles and restriction on women's behavior, mobility, and autonomy, right? So there are several verses which has been given in Manusmriti which talked about the restriction of women when it comes to their behavior, their mobility, their movement, right? Whether they should step out of home or not, they should stick within the 4 walls, they should only limit their behavior to taking care and rearing of child and etc., right? So this all are the things which has been criticized by the scholars when it comes to subjugation of women in Manusmriti, right? So caste-based discrimination, subjugation of women, punitive justice, and harsh punishment, right? So few criticism of few scholars, especially when it comes to human rights and etc., human rights scholars, they criticize Manusmriti for its punitive justice and harsh punishment, right? So punishment like mutilation, right? Like mutilating few organs, hands, and etc. if the lower caste commits any crime, right? Sending people to exile, death in few cases, right? Even like these are the intensity of the punishment for the crimes ranging from theft and adultery to hearsay and obedience, right? Disobedience. So these are the range of crimes and punishment for which Manusmriti again has been criticized, right? So the fourth one is lack of relevance in modern society. Few scholars also suggest that Manusmriti is outdated, and yes, it is outdated because society has walked a long way, walked a very long way. अगर चला भी नहीं तो दोस्तों तो दौड़ा बहुत तेज है हमारी सोसाइटी. From 200 BC to 200 AD we have come today in 2024, and we are like completely, our society is not something very much similar to Indian tradition or something like that. So scholars, they have made some sense when it comes to this particular
this particular criticism when they say that the Manusmriti lacks the relevance in modern society, though we have some continuity of the Manusmriti tradition in our Hinduism culture, right? We still follow some samskara, we still believe in karma kanda, we still follow some rituals prescribed in the Vedic cultures, dharma shastras, and etc., right? If we look at the constitution, how detailed, how beautifully it has prescribed the duties of the executive, the legislature, the judiciary, and etc., right? So the traced can be traced back to Manusmriti, right? So we cannot say that it completely lacks the relevance in modern society, but yes, when we talk about social aspects of Manusmriti, जब हम social aspect like caste discrimination की बात करें दोस्तों, subjugation of women की बात करें, assigning inferior status to few sect of society की बात करें, तब हम बोल सकते हैं कि yes, it lacks relevance in modern society, right? So what can be our ending remark? What can be the conclusion, दोस्तों? So Manusmriti is one of the most controversial text, right? Even in our Indian culture, it is one of the most controversial text. Why do we say most controversial text? क्योंकि we have two lobbies, that is for and against, right? Against. कुछ लोग इसके फॉर में भी बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि पीपल लाइक Dr. Sarvapalli Radhakrishna, right? They were the admirers of the Manusmriti, but at the same time, there were people like B.R. Ambedkar, right? Who strongly criticized the Dharma Shastra like Manusmriti in his book, that is Annihilation of the Caste, right? So he basically asked the people, Harijans, right, to put dynamite on Vedas and Manusmriti, right? So this is a against lobby who have like criticized the Dharma Shastras, Manusmriti, and etc. for their caste-based discrimination and etc., subjugation of women and etc. On the basis of these conditions, they have completely rebuked the Manusmriti, right? They have asked, like B.R. Ambedkar have asked people, the Harijans, to put dynamite on Vedas and Manusmriti, because he says that he believed that the social conditions of Harijans is because of the Manusmriti, the conditions of women is because of the patriarchal society which has been prescribed in the Manusmriti, right? So we have both for and against lobby. Because of this, it becomes very, very controversial text, right? So Manusmriti is also criticized by feminists, very obviously, right? Because of the subjugation of women, the feminist lobby, they have strongly criticized the Manusmriti, right? Despite criticism, Manusmriti remains the major text which defines Hindu personal laws even to this days, right? Even to this day. And that is why it remains very, very relevant. It remains one of the foundation. It remains one of the foundation on which the Indian subcontinent is based upon. All right, so this is how we can positively conclude the Manusmriti, dosto, right? So give it a try. This was the question which was asked in 2013, right? Examine the significance of dharma in ancient Indian political thought, right? So dharma, we have seen the importance of dharma, right? And Manusmriti is the main propounder of dharma, right? It is a dharma shastra. So you can talk about the concept of dharma, right? You can talk about how the concept of origin of state was given in order to have dharma in the society. The concept of divine origin of the king has been given in order to protect the dharma. The duties which has been prescribed to the king is on the line to maintain the dharma in the society, right? The king has to be dharmaraj, the king has to follow the dharma shastra in order to have social order, right? How important it is for having social order, security, peace, harmony in the society. With this, you can try attempting this question and share your answer script. Don't just attempt it, दोस्तों, क्योंकि आप सिर्फ लिखते रहेंगे without any evaluation, आपको पता नहीं चलेगा, right? So try attempting this question and share your answer in the Telegram link that I will mention in the description. वहां पे हमारी एक ग्रुप है, वो आप सबकी कॉपीज पेयर इवेल्युएशन भी कर सकते हैं दोस्तों, एंड आपको इफेक्टिव फीडबैक भी दे सकते हैं, राइट? एंड आपके लिए एक बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट भी होगा, रिवॉर्ड भी होगा, सो दैट यू कैन कीप अटेम्प्टिंग द आंसर एंड शेयरिंग इट on the Telegram, where you can get it peer evaluated and also feedback from me. All right, so with this we are done with the lecture, champs. Thank you so much for watching, and if you have liked this particular lecture, then please show your love by subscribing to our channel, that is UPSC by Naman Raj Gupta, and also do like the video and share this lecture with your closed ones. So until the next time, this is your guide, host and friend Naman signing off. Keep watching,
Keep learning with UPSC by Naman Raj Gupta.